फिर प्लीज चेंज करते हैं. Okay, question number 19 is so we have completed question number 18. Next is question number 19. Question number 19 is that it's made on 18 paper 42. Figure 7.1 shows a ray of light in water that is incident on on a submerged transparent plastic block. किसी plastic block पे hit कर रहा है. The transparent state. What happens to the speed of light as it enters the plastic block? So we know that plastic is a denser medium. Explain your That the answer. speed will slow So down. हम कहेंगे plastic is a denser medium. So the speed of light, the speed decreases. So question number the speed of light, the speed of light decreases, Why? The light bends towards the normal. The light bends. Explain your answer. The light bends towards the normal. Towards the normal when moving from less denser to more denser medium. The light bends towards normal when moving from less denser to more denser medium. Less denser to more denser medium. Okay. So हमने इसमें क्या लिखा है? The speed of light decreases. Why the speed of light decreases? Because it bends towards the normal, जिसकी वजह से its wavelength decrease हो जाएगी. और we know that V equals F lambda. If lambda decreases, so speed also decreases. ठीक है? Next is figure 7.2 shows two principal focuses. And the principal focus on your drop here of a thin converging lens. Converging lens ये बीच में आपको थोड़ा सा मैंने इस तरह का thin सा बनाया हुआ है. Next is on figure 7.2 also show an object of height of the object is given. This is HO, height of the object. Placed close to the lens, two rays from the tip of the objects are incident on the lens, which is two light rays उन्होंने draw की. On figure 7.2, continue the path of these two rays for a further distance of at least 5 centimeter. आपने इनको extend करना है. तो मुझे हमें पता है the ray which is parallel to the principal axis, it will pass through the ray which is parallel to the principal axis, it will pass through focus. तो यहाँ से हम इसको focus से pass करेंगे. And the second ray is incident on the optical center, so it will go straight without any deviation. ये दोनों तो आपने याद रख लेने हैं. If it is parallel, so it will pass through focus. If it is falling on the optical center, it will go straight.
Now, in reality, these two right rays are not intersecting and they are not parallel. So we have to proceed them in a backward direction. और ऐसे से हम इसको पीछे की तरफ क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं. आपने स्केल से डॉटेड लाइन लगानी है एंड यू हैव टू प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और इस वाले को भी पीछे की तरफ प्रोसीड करते हैं. नाउ these rays will seem to be intersect at some point. Let's suppose यहाँ पे intersect करती है, जहाँ पे भी intersect करेंगी ना, this is the location of the image. यहाँ पे आपके पास जो मैं बात कर रहा हूँ, this is the position of the image. तो इसको मैं लिख देता हूँ I से. O for object, I for image. तो जी हमने खुद से प्रोसीड किया है. It means real, it's virtual. Using your answer in B part to find and mark on figure 7.2 the image I of an object O and label this image. ये हमने कर लिया. Next is determine the height of image I. Height आप देखते हैं, मेरी जो कैलकुलेशन है इट्स, मैंने कोई स्केल यूज नहीं किया, so it's 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter. Almost the height of image is about 3 centimeter. तो जो मेरा आंसर है वो कुछ आ रहा है 3.0 centimeter and the range given in the marking scheme is 2.7 centimeter to 3.3 centimeter. तो हमारा आंसर जो है वो विद इन द रेंज है. State and explain whether I is a real image or a virtual image. Is it real or virtual image? Is it real Sir, or it's virtual virtual. image? It's virtual. लिखेंगे image is virtual and it cannot be cannot be projected screen. It cannot be projected on screen. Next is a ray of light in air is incident on a glass block. A ray of light is incident on a glass block. The light changes direction. Light क्या कर रही है? Light is falling on the glass block and changes the direction. For example, this is the ray of light, hits the glass block and Sir, it will slightly change its direction. This phenomena is called diffraction. सर आपकी refraction. आवाज कट रही है. This phenomena is called refraction. Next is जी, अब देखिए आप सही है. Okay, the cause of this effect is the light changes its direction. तो इसकी cause, इसकी reason क्या है? Because the speed changes. Sir, the speed of light will change The speed as it moves from air to glass. हाँ जी बच्चे, तो हम लिखते हैं the speed of light changes. And why the speed of light changes? Due to the change in the refractive index. Due to change Sir, in it moves from air to glass. refractive index. हाँ ये भी कह सकते हैं, क्या कहता है?
आंसर ये जी it moves from air to glass. Hello. It is moving from air to glass. So the speed of light changes. And why the speed of light changes? Due to change in the refractive index. क्योंकि देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का कुछ अराउंड 1.5 होता है. Due to change in the refractive index, the speed changes. And due to change in the speed, तो उससे हम ऐसे ले लेते हैं कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज होगा. चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाएगी. स्पीड के चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस. Figure 5.1 drawn to scale shown in a thin converging lens of a focal length 3.5 centimeter. The focal length is 3.5 centimeter. Okay, so first we have to draw the position of focal length. Focal length बचे यहाँ पे we have 0, zero है. So this is 1, 2, 3, or this is half. 3.5 is here. So this is the focal length of this side. Same 1, 2, 3, and here. This is the focal length of the other side. So focal length आपके पास ये आ गई है. अब बच्चे we have to draw the rays of light. The one ray is parallel. Ray 1 is parallel. So it will pass through the focus. कहाँ से pass होगी? Focus से. It will pass through the focus without any, oh sorry, it's deflect, it will pass to the focus. ऐसे कर देते हैं. Incident on the optical center. तो कैसे जाती है ऑप्टिकल सेंटर पे जब हिट Straight. करेगी? Straight. So this is ray 1, this is ray 2. अब बचे यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्ट हो रही है. अभी मैंने रैंडमली ड्रॉ किया. सो जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट होंगी ना, वहाँ पे आपके पास इमेज बनेगा. दिस इज द इमेज. ठीक है. अब आप स्केल से जब आप ड्रॉ करेंगे, मे बी वो स्लाइटली अवे बनी टुवर्ड्स में, वो आपने देख लेना. सो फर्स्ट वी हैव टू show the correct position of the principal focus. Then we have to consider the two light rays. One is parallel, the second one is incident on the optical center. The point of intersection of these two light rays give the location of the image. And configure. Now, the height of image, ये तो हमारा हो गया configure 5.1. Mark each of the two principal focuses and label each of them with letter F. ये हो गया हमारा. An object of height 4.4 centimeter, this is the height of object, is placed at distance of object is given. On figure 5, rays from the tip of the object O to locate the image I, draw and with the homeopathy. ठीक है. Determine the height of the image. This is important. Height of image. Height हम कैसे find करेंगे? Simple. ये देखें, यहाँ से आपने boxes काट लेने हैं. First box 1, 2, almost 3 आ रहा है मेरा. ठीक है, almost 3 आ रहा है. Maybe ये अभी क्योंकि स्केल डायग्राम नहीं है, आंसर जो है बच्चे वो क्या दिया हुआ है,
थ्री यहाँ पे मेरा, बट आंसर आंसर रेंज इज answer range is 3.6 to 4.1 centimeter. आप बता रहा जी है इसलिए सही तरह बनाई हूँ। आपने बस जस्ट फ्री हैंड बनाई है ना, स्केल से नहीं ड्रॉ की है। जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे यू विल गेट आंसर या हाइट ऑफ इमेज विद इन द रेंज, ठीक है, और ये आ जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है हाइट जो है वो ऑलमोस्ट कहीं इधर जाके अगर मिलती है ना, इतना होता, इसी को अगर मैं प्रोसीड करूँ सही तरह से तो बन जाएगा। यस सर। नेक्स्ट हो जाएगा ना ये। State and explain whether the image is real or virtual. अब ये देखिए ये रियल में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस इमेज इज रियल। हम लिखेंगे इमेज is real. And how we know that? Because can be seen on the screen. Because can be seen on the screen. On the screen. ठीक है? Next is thin converting lens is used to produce an image I of an object. I आपके पास image है किसी भी object होगा. Figure 8.1 shows O and I and the screen on the figure on which the image is produced. So just आपको ना object, this is जी the सर। object, ये यहाँ पे जिसको मैं red कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? This is the object location और image यहाँ पे black चला रहा है on either side, right side, और ये screen है। आगे क्या कहते हैं? On figure 8.1 draw straight line to represent a ray from the tip of the arrowhead of O to the tip of arrowhead of I. आपने ना एक स्ट्रेट लाइन कहाँ से टिप ऑफ O टू टिप ऑफ I, सबसे पहले तो आप ये ड्रॉ कर रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि लेंस कहाँ पर है। इसकी टिप से स्टार्ट करेंगे एंड यू हैव टू इधर से स्टार्ट करते हैं और इसकी टिप को हमने ज्वाइन कर ये अगर हम सेट बनाए तो यहाँ से आपने मूव करवाना है और इसको स्पेस में पास करके लेके जाना। अब ये एग्जैक्ट इसकी टिप पे जाएगा, ऑलमोस्ट लाइन जो है वो स्ट्रेट होगी। अब ये फर्स्ट हमने क्यों ड्रॉ की है बच्चे? इससे हमें क्या पता चलेगा? इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ द लेंस, ठीक है, ये हमें बताएगा कि लेंस कहीं यहाँ पर होगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेंस होगा। ये स्ट्रेट लाइन जो मैं ब्लू से लगा रहा हूँ ये क्या बताएगा? पोजीशन सर ब्लू ऑफ लाइन द, हाइट हो जाएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, ये ब्लू जो लाइन है ना इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन of lens, because when the light rays fall on the optical center of the lens it will go straight, तो इसका मतलब है लेंस यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा था draw a vertical dotted line to indicate the position of the lens, ये भी हो गया, आपने dotted line से करना है। This dotted line must be
this dotted line must extend above and below the principal axis. मतलब principal axis के above और below दोनों मैंने बता दिए हैं. Due line की बात हो रही है. Draw a second ray from the tip of the object O to the tip of the image I. This ray should pass through the principal focus. Label this principal focus. तुम्हारा यहाँ पे नहीं बताया principal focus की position क्या है? No. Yes. नहीं बताया होगा ना. तो फिर हम ऐसा करते हैं, एक ray of light consider करते हैं बच्चे. Going also now. Now we know that the second ray should be, so it will pass through the focus. और हमारा target है कि you have to join the ray with the tip of the image. तो आपने देखना है कि वो कहाँ पे जाके उसकी टिप पे आपने बस रूलर से देखना है कि where you have to place the line so that the line will exactly coincide with the tip of the image. यहाँ पे अब ये जो पोजीशन आई है ना, दिस विल बी द प्रिंसिपल फोकस. और अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या कहेंगे मायदा? Distance Okay. from optical center to principal focus is called very good focal length. और अब मेरे लिहाज से ये है 1 सेंटीमीटर, मैं ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर. तो मेरा जो है हमें क्या करना है, we didn't know the position of the principal focus, but we know that we have to join the ray with the tip of the image. So you have to proceed the ray. Initially it is parallel. After passing through the lens, we know that the light ray should has to pass through the focus. और फिर आपने उसको देखना है कि टिप पे कहाँ ज्वाइन होगी. आपको नहीं पता कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर है, आपने जस्ट लाइन को ज्वाइन करते हैं. सो अब मेरी कैलकुलेशन के लिहाज से the focal length is almost 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो रेंज दी हुई है, रेंज इज 2.2 to 2.6 centimeter marking scheme. Image I is further from the lens. Image I is further from the lens than the object is from the lens. मतलब इमेज देखिए बहुत दूर बन रहा है और ऑब्जेक्ट जो है it is placed very close to the lens, but image is formed away from the lens. The ray should pass. Oh, sorry. Image I is described as enlarged and inverted. State and explain one other characteristics of image. कहते हैं कि इमेज जो है वो लार्ज है और इन्वर्टेड है, इसके अलावा कोई और इस चीज की प्रॉपर्टी बताए. Very good. Yes. The image is It's real. State and explain. the lines are तो कह सकते हैं intersecting because and there is in convergence real. from the screen. Image, image, image is real. Why? Because it is images. They are converges on the screen. On the screen projector. On figure 8.2 shows a spherical fish bowl full of water. मतलब एक fish bowl. By a wind, a black curtain hangs behind the fish bowl. Okay, ये fish bowl है, एक black curtain है. कहाँ गया? A black curtain hangs behind the fish bowl. अब इसके बाद है when full of water, the fish bowls can act as a converging lens. It's just one possible
hazard of leaving the fish bowl next to the window in a bright sunlight? ये important है question. Yes. जी बच्चे, this is Oh, interesting. कहते हैं कि why it is क्या होता है harmful if you place the fish bowl in this way. light. The light cannot It's come just one maybe. possible hazard of leaving the fish. जी, Black. तो आएगी ना window तो है. ये जी. देखिए बच्चे, ये एक किस्म का कन्वेक्स लेंस बिहेव कर रहा है. ये कैसे बिहेव करेगा? एक कन्वर्जिंग सा है. So we know that when all the light rays enter to the fish bowl, so ये सारी लाइट रेज को ना एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर देगा, कन्वर्ज कर सकते हैं. The fish bowl has ability to converge the light rays at single point in this way. Come. तो फिर वहां पे लाइट की Here come. इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हीट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, because all the The light light rays are takes converging at a single ज़्यादा हो जाएगी spot. लाइट की. तो हीट ज्यादा हो जाएगी ना. इंटेंसिटी हीट, क्योंकि देखिए सन से जो लाइट आती है उसमें क्या होता है, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ विजिबल लाइट प्लस आईआर हीट. तो हीट की और लाइट की इंटेंसिटी दोनों की ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, हीट एंड लाइट intensity increases, foul act as a converging lens. It converts the light rays at single point. So at that point, the intensity of heat increases. That can set fire to the curtain. जिसकी वजह से curtain को क्या हो सकती है? आग लग सकती है. The light may converges. The light may converges. The light may converges on single point. The light converges on single point and set fire to curtain. लेकिन लाइट जो है, सोलर रेडिएशन जो है, they are concentrated at the single point of this fish bowl. So at that point, the intensity of heat increases that can set जी. fire to the जी curtain. सर. ठीक है, इसकी समझ आएगी? Figure 7.1 is a diagram of a Okay, next converging one is lens question number 22. used to produce an image of an object. Each point marked F is a principal focus. Write down three terms that describe the image produced. हाँ जी, तो पहले तो हम इमेज को कंप्लीट करते हैं. The one light ray should be angle. ये डॉटेड तक पहले जाना होता है. और इस डॉटेड के बाद आपने you have to show the refraction. It will pass through the focus and will intersect at this position. The second ray incident on the optical center, so it goes straight without any reflection. Now these two rays will intersect at this point, and the point of intersection gives the image location. Write down three terms that describes that the image produced. Write down three terms that describes the image produced. Okay, the image is real, inverted, and enlarged. The image, the image is real, inverted, and enlarged. Point something. The real है, inverted है, and larger than the size of the object. 7.2 show the plane mirror, a point object O and observer I. Okay, O है,
आईज है और मिरर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट लिखे तो on figure 7.2 draw two rays from the object, rays from the object reflected to the observer eye. तो बच्चे आपने क्या करना है, टू लाइट रेज कंसीडर करें, इट इज मूविंग इन दिस वे, दिस इज द रे नंबर 1, ठीक है, और सेम आपने सेकंड रे भी कंसीडर कर लेते हैं, ब्लू से बना देता हूँ। सेकंड रे बच्चे इसी के थोड़ा सा करीब से ही ले जाए, दिस इज द सेकंड रे कमिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट, this second light ray, and you know that the angle of incidence must be equal to the angle of reflection. तो यहाँ पे हम पहले तो we should have to draw the normal. अब बच्चे यहाँ पे angle of incidence to angle of reflection क्या होना चाहिए, No. सेम, ठीक है, any confusion? अब यहाँ से आपने इस साइड पे लाइट रे कंसीडर करनी, with the same angle, mean angle of incidence and angle of reflection should be equal. अच्छा, अब इसके बाद सेकंड रे के लिए मुझे थोड़ा सा इधर को करके बनाना पड़ेगा, इसका एंगल हमें शो करने का सेम एंगल, तो सर आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है, ऐसे। अब ये टू लाइट कंसीडर की है, अब इसके बाद on the assignment to draw two rays from the object reflected to the observer eye. अब मुझे बताओ मिरर में इमेज आपको कहाँ नजर आता है, मिरर में इमेज आपको कहाँ नजर आता Yes. है, इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर होता है ना, और Magnification. मैंने आपको बताया हुआ है कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट के साथ, नहीं, इमेज Yes. डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल प्लेन मिरर, मतलब जितना सेंटीमीटर है मिरर अवे फ्रॉम द Yes. एन इमेज विल आल्सो फॉर्म एट द डिस्टेंस, Yes. ठीक है। चलो मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, इमेज इमेज डिस्टेंस equals to the object distance. Image distance and object distance are equal. तो बच्चे यहाँ से ना आपने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कर ले, और now you have to proceed the light rays backward direction, और पहले आपने मेजर करके ना एक डॉट लगा लेना वहाँ पे, फिर इसको हम तो भी प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पे आपके पास इमेज बने, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो पहले आपने 3 सेंटीमीटर पे ना एक डॉट लगा लें, फिर उधर लाइट रे को कन्वर्ज कर देना है आपने, दिस शुड आल्सो बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो इमेज डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, image is formed inside the mirror, not the outside G. of the mirror. Next question number 23. Figure 7.1 shows a converging lens. अब देखें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। Figure 7.1 shows a converging lens and its principal axis. The point labeled F are each principal focus of the lens. On figure 7.1, draw two rays from the top of object to locate the image I. Image of object O. तो आपने बच्चे क्या करना है, द वन रे शुड बी पैरेलल, और पैरेलल रे क्या होगी, फोकस से पास होगी,
इस तरह से the second ray fall on the optical center, it will go straight without any deflection. So where these rays intersect, this will give you the position of the image. So this one is the image और ये इस तरह से आपके पास image आ जाएगा और object आ जाएगा. Okay, you have to use scale, line should be straight. Next is on figures, ये तो हो गया. Line 3 of the terms below to describe the nature of image produced by the converging lens. तो मुझे बताएं इसमें से what's the nature of this image? This image is real, virtual. Real. Oh, इसकी बात नहीं हो रही, sorry. Converging lens used as a magnifying glass. Magnifying glass में image is Large. Virtual. where is virtual? Virtual, And upright, upright. and And enlarged. enlarged. मुझे लगा ऊपर वाले की बात कर रहे हैं. उन्होंने लिखा used as a magnifying glass. Next है figure 7.2 shows the path of the ray of red light passing through a glass prism. Red light है तो आपको पता है कि सबसे ऊपर रेड होती है, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. तो रेड सबसे ऊपर होगी इन अ प्रिज्म और वायलेट सबसे नीचे होती है. A ray of green light enters the prism along the same path as the ray of red light. On figure 7.2, draw the ray of the green light as it passes through the prism and emerges into the ray. Okay, into the air. तो आपको मैंने बताया हुआ सीक्वेंस. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं और उसका पैथ तो बचे सेम ही है. ग्रीन भी इधर से ही जाएगी और फिर इट विल here you have to draw the normal. इसमें तो ना भी ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें और शो करें कि द लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. मीन लाइट, ग्रीन लाइट शोज मोर बेंडिंग. और इसके ग्रीन लाइट बचे रेड से ऊपर बनेगी कि नीचे बनेगी? Sir, नीचे. नीचे. बस आपने ये शो कर देना, जस्ट फॉर ग्रीन ऐसे शो कर देना. ठीक है. जी. और ऑल द लाइट रेज बेंड्स टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म. बेस की तरफ, ये बेस होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. Figure 7.1 shows a converging lens and its principal axis. The point f1 and f2 are each principal focuses of the lens. Okay. Next is the object O is placed between f1 and the lens. Okay. Whenever the object is placed between the focus and the lens, this is the case of the magnifying glass. Figure 7.1. Draw two rays from the top of the object to locate the image I. ये बचे मैग्नीफाइंग ग्लास वाला ही है because the object is placed between the lens and the focus. So one ray is parallel, it will pass through the focus. Or the second ray is incident on the optical center, it will goes straight without any reflection. ऐसे से बन रहा है. ठीक है. और now these two light rays are not intersecting with each other, so we have to proceed them in a backward direction. तो भी मैं पीछे की तरफ प्रोसीड करूंगा. अब ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं. और द सेम रेड वाली जो लाइट है should also proceed in a the point of intersection give the image looking. This is the image. Yeah.
मे बी आपका थोड़ा सा और पीछे बने, वो आप पे डिपेंड करता है, वो कोई इशू नहीं, बट image should be behind the principal focus, not in between the object and the lens. Oh, sorry, focus and the lens. Okay. The object O is moved to the left along the principal axis. Object को कहाँ पे move कर रहे हैं? Object is moved to the left, इस side पे. And the object is moved to the left of the along the principal axis so that it is further from the lens than f1. Figure 7.2 is a diagram of new arrangement. अच्छा यहाँ पे it is now moving. The object is moved away from the principal focus, away from the lens. इसमें क्या होगा? आपने बस रे डायग्राम शो करनी है. इसमें बचे पहले तो हम लाइट रेस को बना लेते हैं. The one is parallel, और जो ये डॉटेड लाइन लगी हुई है इधर से ही आपने बेंडिंग शो करनी है. You have to show bending and it is moving to this. The second ray must fall on the optical center. It will goes straight और कुछ ऐसे जाके इंटरसेक्ट करे. अब ये मैंने जस्ट जल्दी जल्दी बनाया है. Underline the three terms below that describes the image shown in figure 7.2. अब बताएं इसमें क्या है? The image is real or inverted? Oh, Sir, sorry, real. Sir, real, real. real, upright or inverted? Sir, inverted. Inverted, उल्टा बन रहा है ना? And जी. enlarged or diminished Enlarge. as compared to the object. Next, again, figure 7.3 shows yellow light passing through a glass prism. तो सबसे पहले तो आप ये लिख लिया करें, Roy the wave. अब इसमें येलो की बात हुई है. ओ ऑरेंज पे मैंने टिक लगा दी है. येलो की बात हो रही है. So this is the path of yellow light. Blue light, where is blue? Blue is here. Blue light enters the prism along the same path. On figure, draw the path of blue light as it enters, passes through, and leaves the prism. So it's simple. Again, आपने शो करना है. हम सर थोड़ा नीचे होगा ब्लू लाइट. वेरी गुड. तो शुरू में तो पैटर्न सेम ही होगा. तो ना ऐसे आपने शो करना है कि आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है. Normal is a line which is perpendicular to the surface. A जी. line which is perpendicular to the surface, normal. Now the light will slightly tilted in this way, and फिर और ज़्यादा आपने को इधर शो करना है. बस नीचे बनना चाहिए. So this one is green, yellow, and this one is for blue light. काफ़ी है. जी सर. ओके. अब सारे क्वेश्चन आप देखेंगे इससे रिपीट होंगे. बस जी. बल्कि एक ही क्वेश्चन रह गया. Then we have to start the dispersion of light. जी. Okay. The Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर. थैंक यू.